Please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Hey guys, welcome back to my channel. This is the Vasu here. I know I was away from YouTube बहुत दिनों से, but finally I decided that I'll be constant with my videos every week. I don't have a perfect background, मेरे पास कुछ भी perfect नहीं है this time, but still I decided कि मैं अपनी videos डालूँगी. Let's see क्या response होता है. एंड स्टिल इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो और फ्यूचर में कोई वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना बिकॉज एफर्ट लगता है यार. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी. So without wasting your time, let's get into the video. So first we need a jar and a white acrylic paint, and जल्दी पेंट करने के लिए I'm using wipes. You can use a brush as well, but वाइप से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है और फास्टर होता है. सो आई सजेस्ट यू टू यूज़ वाइप्स और अ स्पॉन्ज. So we have to paint it twice for a better look. Once we are done with our jar, फिर हमें जार के कैप को भी पेंट करना पड़ेगा. आई एम यूजिंग दिस गोल्डन पेंट. एक्चुअली मैंने ब्रश का यूज़ करने की कोशिश की थी बट मुझे टेक्सचर पसंद नहीं आया था. सो आई एम जस्ट नॉर्मली डैबिंग माई फिंगर्स सो दैट इससे टेक्सचर मिले. एंड आई एम लाइकिंग दिस टेक्सचर. सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा चाहिए. आई एक्चुअली लाइक द रिजल्ट. Now we need a black print out of anything. I am using fairy here and just cut it out using a cutter or a scissor and stick it into the jar the way I am doing. But don't forget fevicol हमें black side में use करनी है, ना कि back white side में. Use any type of light like I'm using, and it's totally up to you how you want to decorate the jar because I'm not doing anything. And here we go, our fairy lantern jar is ready.